Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all children? Good? MashaAllah. Today inshallah we will be doing Unit 5 and the title is Walking on the Moon. Take out your English book, Nelson English. Moon landing. Speaking in the early 1960s. How old is this story? In 1960s. The President of the United States of America, USA, John F. Kennedy, said that he wanted the Americans to land an astronaut on the moon before the end of the decade. Means within the next 10 years, decade means 10 years, he wanted Americans to land an astronaut. Who is astronaut? Astronaut. Can you see this picture on this page? Astronaut. Yes, the people who sits in the spacecraft and they go into space to find out. Space means free space. Means free space यानी apart from जो अर्थ से ऊपर चढ़ करके खाली जगह है वहां पर स्पेस कहता है, और मून के ऊपर जो एरिया है ये सब स्पेस में आती है, यानी जहां पर अर्थ का इन्फ्लुएंस, अर्थ की ताकत खत्म हो जाती है, वो स्पेस है, खाली जगह। तो वो चाहता था कि एस्ट्रोनॉट फ्रॉम अमेरिका शुड लैंड ऑन मून और इन द स्पेस समवेयर। In the next few years, many astronauts went up in the spacecraft. After this, after when he said in 1960s, there were many who tried to go to spacecraft, but none actually landed on the moon. उनमें से एक भी didn't land on the moon. In 1969, in which year? 69. When did he said? In 1960, after 9 years of his saying. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, and Michael Collins. Who were the three? Neil Armstrong, Buzz Aldrin, and Michael Collins. 3 astronauts were launched into the space on Apollo 11 spacecraft. Now they started their journey in a spacecraft, जिस व्हीकल में, जिस गाड़ी कहेंगे उसको, जिस डिवाइस में, जिस चीज में वो बैठ करके जा रहे थे, उसका नाम क्या था? स्पेसक्राफ्ट। और उसको स्पेसक्राफ्ट कहते हैं। जैसे प्लेन होता है, उड़ता है, इसी तरीके से इफ एनीथिंग गोज इनटू स्पेस दैट इज कॉल्ड एज स्पेसक्राफ्ट। और उस स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या था? अपोलो 11। इसमें कौन कौन है? 3 लोग हैं। कौन नाम बताएगा बिना देखे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन and Geoff Collin. Am I correct? No, it's Michael Collin. Okay. Its mission was to land 2 of the astronauts on the surface of the moon. What was the mission? Mission means objective है उनका, कुछ करना है। किस मिशन पर है? They have an objective कि उन्हें क्या करना है? To land on the moon. जिस तरीके से जमीन में प्लेन लैंड होता है, उसी तरीके से वो चाहते थे कहां पर हम उतर जाएं? मून पर उतर जाएं। It successfully completed the mission, but not without some problems along the way. Now what happens? They landed in 1969, but not with few problems, but there were big problems on the way. Let's read out to find out how many problems were there. Were there problems? Did they face problems? Yes, they faced many problems. The first problem the astronaut faced came just as Neil Armstrong and Buzz Aldrin were traveling down to the moon's surface in lunar module, the Eagle. Now there is another thing. There is a device called Eagle. अब वो Eagle में उनको जाना है। अब उस device में who was there? Neil Armstrong and Buzz Aldrin. अब जब इसमें आए, वो मून के जो सतह थी, मून की सरफेस थी, उससे थोड़ा ऊपर पहुंच गए। अब वहां से उनको नीचे उतरना है, राइट? उनको नीचे उतरना है। उस नीचे उतरने के लिए क्या हुआ? वहां पर सबसे पहली प्रॉब्लम आई। ओके, द गाइडेंस कंप्यूटर वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। व्हाट वाज द नेम ऑफ द कंप्यूटर? गाइडेंस कंप्यूटर।
आपके स्कूल का नाम क्या है? गाइडेंस इंटरनेशनल स्कूल, माशाल्लाह। गाइडेंस, गाइडेंस का मतलब क्या होता है? गाइडेंस मींस वन हु गाइड, guide means show you the path, and we at Guidance International School try to show you path of success कि असल कामयाबी का रास्ता कौन सा है। Okay, guidance computer was not working properly, computer ने अपना वर्क करना छोड़ दिया। any second is a phrase, right? Any second means कभी भी कुछ भी हो सकता है। It could stop working and there would be nothing the two astronauts could do to save the mission. किसी भी टाइम, anything could happen at any time. If it stops working, if the computer stopped working, the mission was failed. This was the problem. Emergencies were nothing new to the two experienced men aboard the Eagle, but they hadn't practiced this one as no one believed it could happen. Now they might have think कि ये problem आ जाएगी, ये problem है, but who might have think that computer will stop working? That was something which they were dependent, right? उसके ऊपर 100% depend थे वो. They have faced many problems, they have experienced, but they were not at all aware कि ये problem आ जाएगी, कि computer ही काम करना छोड़ देगा. कुछ भी हो सकता था. Nothing new. This is the phrase again. Nothing new मतलब कोई नई बात नहीं थी उनके लिए. It was an old thing. Problem आती रहती थी उनके सामने तो. The support team back on the earth waited heart in mouth. उनका दिल जो था वो मुंह को आ गया, यानी उनकी सांसें रुक गईं. Who? The support team which was sitting on the land. जो जमीन पर इंतजार कर रहे थे, वहां से कंप्यूटर के सिग्नल आना खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, पता भी नहीं चलेगा कि वो जिंदा भी है या मर गए. नील आर्मस्ट्रॉन्ग had only one choice. नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पास कितनी चॉइस थी? Only one choice. He would have to fly the Eagle manually. Now the choice was कि अब कंप्यूटर से नहीं चलेगा, अब उसको खुद चलाना पड़ेगा. This was the problem. With time and the fuel running out, there was less time and the fuel was also less. कम था. Armstrong finally thought he saw the landing site, but this was the next problem. Armstrong thought that he has seen the site where he has to land. जहां पर उसको उतरना था, जहां उन्होंने टारगेट बनाया था, हमें यहाँ उतरना है, तो वो प्लान हो चुका था कि यहीं उतरेंगे. लेकिन क्या हुआ कि यही एक प्रॉब्लम थी. दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? The Eagle had overshoot the chosen landing site. Overshoot means आगे निकल गए. जो लैंडिंग साइट थी जहां उतरना था, they overshoot the choosing landing site by 6 kilometers. How many kilometers they were ahead? 6 किलोमीटर आगे निकल गए. 6 किलोमीटर आगे चले गए. They were heading for a football field size crater. अब उनके पास एक बहुत बड़ा सा एक पत्थर का एक टुकड़ा जो था उसकी तरफ बढ़ रहे थे, फुटबॉल के साइज का, filled with enormous rocks, और उसके अंदर पत्थर ही पत्थर भरे हुए थे. उसके ऊपर टक्कर हो जाए, कुछ हो जाए. Armstrong accelerated away from the crater at 88 kilometers per hour. Now what he did, जब उससे टकराने का था तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसकी स्पीड जो थी अपनी स्पेसक्राफ्ट की, he accelerated means उसको बहुत तेजी से बढ़ा दिया. कितनी स्पीड से बढ़ाया उसने? 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को तेज कर दिया. जितनी स्पीड थी उसमें 88 किलोमीटर की स्पीड को ऐड कर दिया. The support team were puzzled by his highly unexpected maneuver. वो unexpected था क्या? यानी this was not planned कि क्या करना है क्या नहीं करना है, but this was his thinking. उस वक्त उसको क्या करना था उसको यही समझ में आया. सारी सपोर्ट टीम जो थी वो एकदम से चौंक गई उसके इस बिहेवियर पर. मिशन डायरेक्टर जॉर्ज हैड सेड टू हिमसेल्फ, गेट इट डाउन नील, गेट इट डाउन. अब क्या हुआ? पीछे से वो क्या कह रहे थे? जॉर्ज हैड अपने आप को कह रहे हैं. कनेक्शन तो खत्म हो गया बिकॉज ही वाज ऑपरेटिंग इट मैनुअली, राइट? कनेक्शन इज लॉस्ट. नाउ द सपोर्ट टीम, the managing director, what was the name of? George Hedge. He was saying to himself, एस्ट्रोनॉट से तो बात नहीं कर सकते थे,
He was saying to himself, get it down, Neil, get it down. इसको अब उतार लो, इसको हल्का कर लो, इतनी स्पीड नहीं चलाओ. The seconds ticked away. यानी अब जो थे एक एक सेकंड जो था वो भारी पड़ रहा था. With less than 20 seconds left to land safely, Aldrin's voice was heard. Contact. अब 20 सेकंड लैंडिंग को बचे हैं कुल. सिर्फ उस वक्त आवाज सुनाई दी किसकी? एल्ड्रिन की. कॉन्टैक्ट. उससे पहले कोई आवाज ही नहीं नजर आ रही थी. ट्रैंक्विलिटी बेस हियर. द ईगल हैज लैंडेड. ट्रैंक्विलिटी बेस, इसका देखिए मीनिंग क्या होता है. द नेम गिवन टू द साइट वेयर द ईगल लैंडेड. अब इस ट्रैंक्विलिटी बेस वो जगह है जहां पर ईगल लैंड हुआ. देखिए आप ईगल, कैन यू सी दिस? दिस इज ईगल. ये ईगल डिवाइस है. इस डिवाइस को उन्होंने लैंड किया वहां पर और इसको ही वो कहते हैं ट्रैंक्विलिटी बेस. इस जगह को ट्रैंक्विलिटी बेस हियर द ईगल वाज लैंडेड. ये जगह है जहां पर ईगल लैंड हुआ. अनाउंस्ड आर्मस्ट्रॉन्ग. आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा. These special words were heard by 600 million people back on the earth. इससे पहले उनकी आवाज नहीं आ रही थी. जैसे ही as soon as they land, बस 20 सेकंड पहले उनकी आवाज सुनाई देने लग गई और वो सबसे पहला वर्ड था contact. और the next word which everyone heard, 600 million. What 600 million? The people on the land. Everyone was watching it. सब कुछ टीवी पर आ रहा था, सब कुछ कंप्यूटर्स पर लोग देख रहे थे बैठे हुए कि अब आए अब आए अब आए. 600 million people were watching it. About 6.5 hours later, how many hours later? कितनी देर के बाद? 6.5 घंटे के बाद. The eagle's door was opened and Armstrong climbed out. After 6.5 hours, eagle के दरवाजे खुल गए. And who climbed out? कौन आया उसमें से? Neil Armstrong. Armstrong climbed. He wore a moon suit. Moon suit. Night suit तो सुना है हमने. What is a moon suit? Moon suit is a suit which we wear while we are traveling to moon. जब आप moon पर जाएंगे तो आपको ये moon suit पहनना पड़ेगा. Carried a backpack weighing 49 kg. He was having a backpack. Backpack means आप अपने कपड़े सारे बांध करके किसी बैग के अंदर बड़ा सा जो पीछे डाल लेते हैं. The one that you carry in the school. स्कूल में जो बैग लेकर के आते हैं, that is also known as backpack. उसके अंदर सब सामान होता है. What was the weight of that backpack? 49 kg. And had enough oxygen for 4 hours. और उसके पास, उस सब के पास क्या था? ऑक्सीजन वहाँ, it is not available. So he was having a cylinder of oxygen also. तो सिलेंडर जो था उसके अंदर, what was the capacity for 4 hours? 4 hours तक वो ऑक्सीजन ले सकते थे कुल. Heading down the ladder, he uncovered a TV camera on the side of the eagle so that the world could witness his first step. Now there was a camera over on the eagle. As soon as he stepped down, he opened the camera so that everyone on the earth can look what he is doing. So that the world could witness his first step, so that the world could see his first step. Now in this you can see it. He's coming down. As his feet touched the moon's surface, he said. जैसे ही उसके मून पर पैर रुके, he said something. What did he say? That's one small step for a man. पहला छोटा कदम है इंसान का ये. One giant leap for mankind. इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा कदम. मेरा तो एक छोटा सा ही कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए क्या कुछ हो सकता है. मून पर जाने से हमें कितने फायदे हो सकते हैं, गॉड नोज. It was 3:56 a.m. What was the time? 3:56 in the morning. 4 बजे से पहले. And what was the date? 20 July 1969. What was the date? 20 July 1969. Or 20 July. What is the date today? 20 July? आज 20 जुलाई तो नहीं है. 1969. What a tragedy. 20 July
इतने साल पहले और आज 20 जुलाई को हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। जॉन एफ कैनेडीज ड्रीम हैड कम ट्रू। Whose dream was it? John F. Kennedy. Who is John F. Kennedy? American's president at that time, USA, president of USA, right? Okay, now come to word check. Find each word in the text, choose the correct meaning. Now this is very easy. इन दोनों में से एक word ठीक है. Decade, year or 10 years? 10 years. Mission, something to be done, or hope, something to be done. Manually, with the help of the computer, by hand. Hand से चीज को कहेंगे manually, या कंप्यूटर से चीज होती है हाथ से, by hand. Overshoot, went too far, did not reach, went too far. Accelerated, accelerated, speeding up या slow down, speed it up. Witness, hear about या see, witness means देखना. Witness box होता नहीं है, witness box में आइए, कोर्ट में ऐसा बोला जाता है. Find these phrases in the text. Any second, any moment. Nothing new. Nothing new means not new. It was known. It was already done. Heart in mouth. Heart in mouth means सब लोग घबरा गए, परेशान थे. Unexpected maneuver. Unexpected maneuver means which was not expected from him. एकदम से ऐसा कदम उठाना जो कि नॉर्मल ना हो, abnormal. All right, that's the end of the chapter.